દિલ્હીના રસ્તા પર નિવેદન આપવામાં આવ્યું રમેશ બિદુડી દ્વારા અને વિવાદનો મધપૂડો એમણે છેડી દીધો અને એ જ મધપૂડાની મધમાખીઓ જ્યારે એમને કરડી ડંખી ત્યારે એમને સત્યનું ભાન થયું અને એમણે માફી માંગી પણ જોડે જોડે એ પણ કહ્યું કે જ્યારે લાલુ પ્રસાદ બોલ્યા હતા તો એમનો તો કોઈએ વિરોધ કર્યો નહોતો, મારો વિરોધ શા માટે હજી તો આ માફી માંગી ન માંગી બધું પતે ન પતે ત્યાં તો ફરી એકવાર એક વિવાદ તેમના દ્વારા ઉભો કરી દેવામાં આવ્યો અને ફરી એકવાર એ વિવાદના મધપૂડાની માખીઓ એમને જ ડંખતી દેખાઈ રહી છે। मैं बहुत व्यथित हूं इनके करैक्टर से, इनके चरित्र से, चाहे वो आतिशी हो और चाहे कांग्रेस हो। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ उस सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है।